Hello everyone and welcome to my channel. My name is Bhumika Parashar and I scored 354 in my NEET 22 biology, and I am here to help other NEET aspirants in their last crucial days of preparation. So in this course I'll be completing whole class 12th and class 11th biology in the next 15 to 20 days, and we'll cover each chapter unit wise and topic wise weightage according to how many questions are asked every year from that particular chapter. So we'll be starting with some high weightage and easy scoring units first. Today I'll be starting with ecology, and the first chapter is organisms and population. Every year almost 3 to 4 questions are asked from this chapter, so you can easily score around 16 marks from this. And starting with organisms and population, so we should know what is ecology. Ecology is basically the interaction of organisms within themselves or the outside environment they live in. So Ramdev Mishra was the father of ecology in India, and he studied from Banaras in the university. So moving forward to ecology, ecology has four different levels of biological organization, which are an individual, then a population, then a community, then a biome. A community can be different species living in the same area, and a population is the same species living in a particular area, which can interbreed with each other, right? And let's move forward. So organism and its environment, how they interact. So an individual is only considered with the physiological ecology. When we talk about an individual, we're not talking about the interactions, we only talk about its own body functioning. हम जब किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ उसके बॉडी फंक्शंस को स्टडी कर रहे हैं. वी स्टडिंग इट्स ओन फिजियोलॉजी, वी स्टडिंग द एंजाइमेटिक रिएक्शंस इन हिज बॉडी एंड उसके other synthesis process कैसे हो रहे हैं, but we're not studying the interaction it makes. So at an individual level, the ecology is only considered to be as physiological ecology. As we move forward, an organism adapts to the environment in ways of reproductive activities or its survival. So as we know that how the earth rotates or revolves around the sun, it makes variations and it results into different seasons. Now along with these seasons, हमें अगर हम स्टडी करें तो टेम्परेचर कंडीशंस एंड रेनफॉल ये भी बहुत अफेक्ट करते हैं एक एरिया की वेजिटेशन और प्रोडक्टिविटी को. सो देयर इज अ ग्राफ गिवन इन एनसीईआरटी which plots mean annual temperature against the mean annual precipitation, and इसमें different biomes given है. So these biomes, जब वेरिएशंस आती है हमारे रेनफॉल में और टेम्परेचर में, सो दीज कंडीशंस डिटरमाइन एंड फॉर्म different biomes, and different biomes are also constituent of different habitats. अब habitat क्या होता है? Habitat is the address, कहाँ वो organism रहता है, उसके अराउंड क्या क्या चीज़ें present है. Habitat में दो component होते हैं उसके, abiotic components and biotic components. Abiotic components को हम physical chemical components भी बोल सकते हैं, and biotic components are the living organisms an organism interact with. So it can be its prey, pathogens, predators, competitors, and so on. And these variations collectively form different biomes, and these biomes are deserts, grasslands, temperate forests, tropical forests, and Arctic regions. So in India, four types of biomes are present. These are sea coast, desert, deciduous forest, and tropical forest. So let's study this graph in NCERT. This plots the mean annual temperature and the mean annual precipitation. Precipitation is the rain or snowfall in area, and as we can see, desert में temperature है but rainfall नहीं है, so it has a very low productivity. Then we move to grassland. Grassland में temperature है but rainfall थोड़ी सी ज़्यादा है desert से, but वैसे low rainfall ही है. And temperate forest has moderate conditions. Tropical forest has the best conditions for productivity because इसमें temperature भी मिल रहा है हमें adequate and rainfall भी मिल रही है अच्छी. So and the Arctic region is the negligible or the lowest productivity region because वहाँ पे हमें rainfall तो मिल रही है but temperature sub zero levels पे temperature बहुत कम है. And enzymatic reactions के लिए हमारे body functions के लिए temperature बहुत important होता है because किसी भी enzyme का एक optimum temperature होता है to work properly. So now we come across two terms, that is a habitat and a niche. So what is a habitat? Habitat सिर्फ हमें एड्रेस बताती है कहाँ वो ऑर्गेनिज्म रहता है. एंड एज आई टोल्ड यू देयर आर टू कंपोनेंट्स इन अ हैबिटेट जिसमें एबायोटिक कंपोनेंट्स भी आते हैं और बायोटिक कंपोनेंट्स भी आते हैं. Whereas niche में हम सिर्फ एक स्पेसिफिक रोल बताते हैं ऑर्गेनिज्म का, what kind of nutrient it utilizes, and one specific, like let's say
niche cannot be same for two organisms, but habitat same हो सकते हैं. It also niche basically talks about the kind of nutrients it utilized by an organism and the kind of conditions it can tolerate. So niche is very specific term for a particular organism living in a habitat. So let's move forward to the major abiotic factors. Abiotic factors कौन से present होते हैं environment में जो एक organism को affect करते हैं? There can be temperature, light, water or soil. So temperature being the most इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर. ये क्यों है? बिकॉज हमारी एंजाइम फंक्शनिंग में टेम्परेचर बहुत क्रूशल रोल प्ले करता है. एंजाइम्स की एफिशिएंसी ही एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे आती है. एज यू स्टडीड इन क्लास 11 बायोमोलिक्यूल्स, देयर इज अ ग्राफ गिवन एंड इट रिप्रेजेंट्स द एंजाइमेटिक एक्टिविटी अगेंस्ट द टेम्परेचर. So we have a particular optimum temperature and it shows the peak at a very narrow specific range, which is the optimum temperature for that enzyme. So वो एंजाइम सिर्फ एक ही टेम्परेचर पे काम करेगी. अगर वो पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं होगा तो एंजाइम प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेगी. एंड दैट इज वाई द टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. As we know, the temperature gradually decreases from equator to poles. Equator पे हमें high temperature मिलेगा and जो poles हैं, pole regions हैं, वो बहुत ठंडे होते हैं. So and हमारे पास बहुत different habitats भी present हैं, like the Arctic regions which have sub-zero levels of temperatures. तो वहाँ पे बहुत colder area वाले ही survive कर पाएंगे, and the hydrothermal vents और the very high temperature areas, वहाँ पे सिर्फ hot areas वाले survive कर पाएंगे. and हर जगह की habitat के according ही वहाँ का flora and fauna होता है. हर जगह बहुत डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं. ऑर्गेनिज्म सेम नहीं होते बिकॉज उनके हैबिटेट में कंडीशंस डिफरेंट है. टेम्परेचर कंडीशंस अफेक्ट अ लॉट इन एन ऑर्गेनिज्म्स हैबिटेट. सो moving forward, we have two kinds of organisms divided by the temperature kinds, divided by the kind of range of temperature they can tolerate. So we have eurythermal and stenothermal. Eurythermal organism बहुत wide range के temperature को tolerate कर सकते हैं, and stenothermal सिर्फ एक narrow range को बहुत कम छोटी range वाले temperature में ही restricted होते हैं. नेक्स्ट फैक्टर कैन बी वाटर, एंड वाटर में हमारी ऑस्मोलैरिटी या सॉल्ट कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कहाँ पे कैसे सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है फॉर द काइंड ऑफ लाइफ इट होल्ड्स. एंड हमारे जो इनलैंड वाटर्स होते हैं, फ्रेश वाटर्स होते हैं, वहाँ पर हमारी सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन दैट इज सैलिनिटी इज लेस देन 5 parts per thousand. एंड एज वी मूव टू सीज और ओशंस, द सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स around 30 to 35 parts per thousand. And in very hypersaline lagoons, the salt concentration around is more than 100 parts per thousand. And as you know, aquatic life पूरी water पे ही dependent है. तो water में भी हमारे पास two kinds of organisms होते हैं. One is euryhaline and one is stenohaline. euryhaline में बहुत wide range of salinity को tolerate कर सकता है वो animal, and stenohaline में बहुत narrow range को tolerate कर सकता है. यूरीहलाइन वाले जो होते हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं, बट अगर हम स्टीनोहलाइन वाले को किसी ऐसी जगह पे जाके रख दे जहाँ की सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन वो टॉलरेट नहीं कर सकते तो वो मर जाएगा, बिकॉज उसको ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स हो जाएंगे उसकी बॉडी में. वो अपनी बॉडी में उसकी कॉन्सेंट्रेशन अकोमोडेट नहीं कर पाएगा उसके अकॉर्डिंग, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट वाटर की प्रेजेंट होगी उसके अराउंड. सो नेक्स्ट फैक्टर इज लाइट, एंड लाइट से फोटोसिंथेसिस होता है. सो लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट बेसिस, लाइक प्लांट लाइफ के लिए लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज अगर लाइट ही नहीं होगी तो वो फोटोसिंथेसाइज नहीं कर पाएगा. प्लांट फोटोसिंथेसाइज नहीं कर पाएगा तो उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, एंड ऑल द लाइफ इज डिपेंडेंट इनडायरेक्टली ऑन सनलाइट. हम एनर्जी भी सनलाइट से ले रहे हैं. सो लाइट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. एंड एज वी नो, देयर आर टू काइंड्स ऑफ plants, like there is tall canopy trees जिसको वो हीलियोफाइट्स होते हैं बिकॉज उनको डायरेक्टली सनलाइट मिल रही है. एंड देन देयर आर ओवरशैडोड ट्रीज जो कि बहुत बड़े ट्रीज के पीछे छुप जाते हैं, एंड दे आर अडेप्टेड टू लो लाइट इंटेंसिटी, सो दे आर कॉल्ड स्कियोफाइट्स. एंड अब लाइट हमारी इंपॉर्टेंट होती है, एक तो जो एनिमल्स की फोरेजिंग एंड रिप्रोडक्टिव माइग्रेटरी हैबिट्स होती हैं उनकी सीजनल ब्रीडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइट. प्लांट्स के फोटो पीरियड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइट. सो लाइट इज़ अ वेरी क्रूशल फैक्टर. अब हम अगर टेरेस्ट्रियल या फिर लैंड की बात करें, वहाँ पर तो लाइट बहुत इजीली अवेलेबल होती है, दैट्स द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी. बट अगर हम सीज की बात करें, डीप ओशन बेड्स की बात करें, तो वहाँ लाइट नहीं पहुँचती है. वहाँ सिर्फ जो कलर्ड कॉम्पोनेंट्स होते हैं, डिफरेंट वेवलेंथ्स होते हैं, वो डिटरमाइन करता है कैसे एनिमल्स प्रेजेंट होंगे कौन से रीजन में. तो सर्फेस पे हमारे वो प्रेजेंट होंगे जहाँ पे जिस तरह की वेवलेंथ पहुँच रही है. लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, ग्रीन एल्गी सर्फेस पे पाया जाएगा, और जो रेड एल्गी होता है, बिकॉज रेड वेवलेंथ सबसे नीचे भी पहुँच जाती है डीप सी बेड्स पे, तो वहाँ रेड एल्गी मिलता है. एंड
Moving forward, next factor can be soil. Soil में हमारा nature, percolation, water holding capacity and grain size very important. Sandy soil का grain size बहुत ही बड़ा होता है and clay soil grain size बहुत छोटा होता है. Loamy soil is the perfect soil and the most fertile soil for cultivation. So this much is only required for your soil factor. Now as we move forward to responses of abiotic factors, अब कैसे एक ऑर्गेनिज्म उसके अराउंड एबायोटिक कंडीशन से रिस्पॉन्ड कर सकता है, कैसे वो अकोमोडेट कर सकता है अपने आप को. सो there is a graph given in NCERT which plots the internal level of an organism's body to the external environment, external ambient atmosphere. तो यहाँ पे 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं. there are conformers, there are regulators and there are partial regulators. रेगुलेटर्स वो होते हैं जो होम्योस्टैसिस कर सकते हैं. होम्योस्टैसिस इज मेंटेनिंग अ कांस्टेंट बॉडी इन्वायरमेंट. अगर हम अपने बॉडी फ्लूइड्स का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन और हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर आउटसाइड इन्वायरमेंट का बदलते हुए भी सेम रख सकते हैं. लाइक हमें either we live in a scorching hot desert or we live in a very cold area, तो हमारा internal body temperature same रहेगा. And if we talk about the organism which cannot maintain homeostasis, तो उनका internal body temperature ambient atmosphere के according change होता रहता है. So that is how regulators and conformers are different. Regulators regulate their internal body temperature to the same level, चाहे atmosphere का temperature कितना भी change हो या condition कितनी भी change हो. Conformers simply adapt to the outside environment, जहाँ जैसा बाहर का होगा वैसे ही हो जाएंगे. And partial regulators starting में conform करते हैं, like starting में they try कि वो adapt कर पाएँ, change कर पाएँ, but eventually if they're not able to adapt तो वो regulate कर लेते हैं. Like we can take an example, अगर हमें बहुत गर्मी लग रही है तो हम AC ऑन कर लेंगे, हम अपने आप को गर्मी नहीं लगने देंगे. बट जो कन्फर्मर्स हैं वो गर्मी में रह लेंगे, वो AC नहीं अफोर्ड कर सकते. एंड द पार्शियल रेगुलेटर्स वो होम्योस्टैसिस मेंटेन जो कर सकते हैं, जो रेगुलेट कर सकते हैं, वो बहुत कम है. लाइक सिर्फ मैमल्स और वर्टिब्रेट्स मेंटेन कर सकते हैं होम्योस्टैसिस एंड सम बर्ड्स आल्सो. बट जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं, जो और एनिमल्स हैं, वो नहीं मेंटेन कर सकते होम्योस्टैसिस. व्हाट डू दे डू? वो सिंपली कंफर्म कर लेते हैं, वो आउटसाइड एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं एम्बिएंट एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग. And as mammals can adapt or maintain their homeostasis in any environment, वो अपने आप का internal body temperature and thermoregulation and osmoregulation कर सकते हैं, चाहे outside temperature या outside concentration कैसी भी हो. So that's the major reason of evolution कि mammals इतना successfully evolve क्यों हुए हैं, इतना largely diversified जगहों पे कैसे रह सकते हैं. Next is conformers. Conformers constitute the 99% of the population जो अपना internal body temperature बाहर के environment के साथ ही change कर लेते हैं. So they cannot maintain a constant internal environment. Their body changes with the ambient atmosphere or the ambient temperature. These can be aquatic animals. The osmotic conditions of body fluids change with that of the outside environment. Like हमारे oceans में कैसी osmotic concentration present है, उसके according उस aquatic animal के अंदर की osmotic concentration भी accordingly regulate होगी. वो change करता है अपने osmotic concentration according to the outside body fluid. Like हमारे blood की concentration is 300 milliosmol per liter. तो वो same रहती है because we can osmoregulate. हम अपने constant body fluid की osmotic conditions regulate कर सकते हैं, but वो नहीं कर सकते. So they change with the ambient environment. So as we know, heat loss या heat gain surface area से बहुत ज़्यादा related होता है. So जो छोटे animals होते हैं उनकी volume बहुत कम होती है और surface area बहुत ज़्यादा होता है. Surface area और volume का like the ratio is not appropriate for them to maintain a constant temperature or constant conditions to adapt. So that's the only reason कि जो छोटे animals होते हैं वो colder areas में नहीं मिलते हैं. And because heat loss बहुत जल्दी होगा उनके surface area से, because volume कम है and surface area ज़्यादा है. So that's the only reason small animals are not found in the colder regions. अब अगर stressful conditions हैं, unfavorable conditions हैं, तो एक organism क्या करेगा जो regulate नहीं कर सकता? It can either move to a different area, वो migrate कर जाएगा, या फिर वो suspend कर देगा अपना एक basic function suspend कर देगा. Like the winter sleep bears do, and the summer sleep is called aestivation, जो snails and fishes करते हैं. So that's the suspension, and that is suspending process. And the migration is जैसे जो colder areas से birds आते हैं, Siberian cranes आते हैं राजस्थान के
एक पार्क राजस्थान के दिस क्योलाडो नेशनल पार्क में जो भरतपुर में है, बिकॉज वहाँ पर बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर प्रेजेंट होता है एंड फॉर देम टू अडेप्ट और टू मूव टू बेटर फेवरेबल कंडीशंस वो यहाँ पर राजस्थान में आते हैं फॉर सम टाइम एंड दे कम एवरी ईयर बिकॉज वहाँ पे बहुत कोल्ड टेम्परेचर होता है. So what can be the adaptations present in an organism? Adaptations are the responses that attribute the organism to to accommodate itself with the outside environment. अगर हम किसी चीज़ से अडेप्ट कर लेंगे तो हम उसके अगेंस्ट अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप कर रहे हैं. अडेप्टेशन is an attribute of an organism, physiological, it can be morphological or behavioral, that enables the organism to survive and reproduce in its habitat. जो कि एक ऑर्गेनिज्म को बेटर सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं, बेटर उसकी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में हेल्प करते हैं इन अ वे कि वो आउटसाइड एनवायरनमेंट के साथ कोप कर सके. सो वी हैव एन एग्जांपल ऑफ लिजर्ड बास्क इन सन. जब ठंड होती है सो व्हेन द सनलाइट कम्स सो वहाँ पर बैठ जाती है एंड इट टेक्स द सनलाइट और द एनर्जी और हीट, एंड जब कोल्ड एरियाज होते हैं वो अंदर चल जाती है फॉर द काइंड ऑफ हीट इट वांट्स. And another, this was the behavioral type of adaptation in the lizard, and other adaptation can be the physiological level, like the kangaroo rat. The kangaroo rat can do its internal fat oxidation and उससे उसको water मिलता है और वो अपनी यूरिन को भी concentrate करता है, like from the concentration of its urine and its internal fat oxidation वो water loss को कम करता है अपना. So in this way it copes up with the outside environment because जहाँ पर kangaroo rat मिलता है वहाँ पर water इतना नहीं होता. So for its survival and its better reproductive activities or everything, for its better life processes altogether, it adapts or it has certain physiological processes happening in its body जो कि उसको allow करते हैं better survive. Now apart from the physiological adaptations can also be anatomical. Like anatomical adaptations can be कुछ प्लांट्स में संकन स्टोमेटा होते हैं बिकॉज ताकि उसका वाटर लॉस कम हो सके. कुछ प्लांट्स में उनकी लीव्स ही स्पाइन्स होती हैं बिकॉज सरफेस एरिया कम होगा तो वाटर लॉस कम होगा, लाइक अपोंचिया. एंड वी ऑल्सो हैव कैम पैथवे विच इज़ अ फिजियोलॉजिकल मेजर अगेन to reduce the water loss and increase the productivity of plants. Now we have two very important rules. First is the Ellen's rule. Ellen's rule says that mammals from colder climates generally have shorter ears and limbs to minimize heat loss. Again, heat loss या heat gain surface area से related होता है. So surface area अगर कम होगा तो उसका heat loss भी कम होगा particular. एंड अगर सर्फेस एरिया ज़्यादा होगा तो हीट लॉस भी ज़्यादा होगा. ऑल्सो पोलर सीज में जो एक्वेटिक मैमल्स होते हैं उनकी बॉडी में एक थिक फैटी लेयर होती है विच इज़ कॉल्ड ब्लबर, जो इनको इंसुलेशन प्रोवाइड करता है और उनका बॉडी हीट लॉस को रिड्यूस करता है, मिनिमाइज करता है. सो नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू द kinds of, we have the population attributes. Population attributes, what are them? So if we talk about a population, हम एक individual की बात नहीं कर रहे हैं. We are studying a group of members of similar species or same species, let's say, which live in a particular area and जो interbreed कर सकते हैं. So in a population there are death rates and birth rates, whereas an individual has the deaths and births. So what is a birth rate? Birth rate talks about the individuals that are newborn, like जितना increase हो रहा है upon the initial population present. So एक pond में अगर 20 lotus plants हैं and 8 lotus plants और add हो गए हैं, so what would be the birth rate? Birth rate would be 8/20. That would be 0.4%. So moving forward, we have the age pyramids. Age pyramid is just a graphical representation of the kind of age groups of individuals present, and we have three kinds of age groups. We have post-reproductive, we have reproductive, and we have pre-reproductive. अगर pre-reproductive सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद reproductive और सबसे कम post-reproductive, मतलब उस country में, उस particular area में सबसे ज़्यादा individuals pre-reproductive age के हैं और उसका youth बहुत ज़्यादा है. So that would be an expanding type of age pyramid. अगर हम stable की बात करें तो it has same number of reproductive and the pre-reproductive individuals, while the post-reproductive individuals are lesser. Declining में pre-reproductive कम होंगे, reproductive सबसे ज़्यादा होंगे और post-reproductive उससे कम होंगे. So in this we have older population and the children. We have older population lesser, but we have reproductive population of the most number of individuals. But
eventually जब वो reproductive population would grow further and उसकी age increase होगी, so we would have more of older members. So इस country की declining population है because the children or the pre-reproductive population is very less is in this country or in this kind of age pyramid. अब अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें, इट डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर्स: natality, mortality, immigration and emigration. Immigration and emigration is basically moving out or moving in a population. अगर कुछ इंडिविजुअल्स बाहर चले गए उस पॉपुलेशन से, उस एरिया से, तो दैट इज इमिग्रेशन. एंड अगर कुछ इंडिविजुअल्स एंटर कर रहे हैं उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, इनिशियल पॉपुलेशन में, दैट इज द इमिग्रेशन. And natality would be the number of births given in a period that a population added to the initial density. अगर हम एक natality की बात करें तो वो सिर्फ उतने individuals हैं जो add हुए हैं, like newborns. और mortality is the number of deaths in a population during a given period. एक particular time frame में, एक particular period में कितने लोग add हो रहे हैं, कितने new births हो रहे हैं और कितने deaths हो रहे हैं, that is respectively natality and mortality. So now as we see, a population density would be increased by immigration and decreased by emigration. In the same way, it would be increased by natality and decreased by mortality. तो immigration and natality population density को increase करते हैं, immigration and mortality decrease करते हैं. We have this formula in NCERT. It's a very simple thing. The new n, that is population density, t plus 1 at time t plus 1 or a given time which is after a particular time frame, is equal to nt plus b plus i minus d plus e. तो जो बर्ड्स और इमिग्रेशन है और जो नेटालिटी और इमिग्रेशन है वो पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज कर रही है, तो वो ऐड हो रहे हैं. एंड द डेथ्स एंड मोर्टालिटी आर डिक्रीजिंग, तो वो सबट्रैक्ट हो रहे हैं इंडिविजुअल पॉपुलेशन डेंसिटी से. Now we have two types of growth models. First is exponential growth and second is logistic growth. Exponential growth की बात करें तो the growth models can be of two types: exponential growth and the logistic growth. Exponential growth talks about the unlimited availability of resources. When the resources in a habitat are unlimited, each species would grow to its fullest potential. Like अगर resources हमारे पास कोई limitation नहीं है, कोई restriction नहीं है, so each species, like हर organism अपने fullest potential पे grow करेगा, अपने fullest potential पे उन resources को utilize करेगा and increase करेगा number में. So we have these equations. So in case of exponential growth, we have this graph given in NCERT which plots the population density against the time. So this graph shows a rapid increase in the population number and the growth curve is J-shaped. The equation given is dn by dt is equals to Rn. So in this, R is the intrinsic rate of increase or the reproductive fitness of an individual or a species, let's say a species. And the dn by dt is the increase in the population density over the period of time. So as we have this R value for Norway rat is 0.015, the R value for a floor beetle is 0.12. Next type of growth model is the logistic growth. Logistic growth talks about the more realistic situation in a natural habitat. No population of any species in nature has its own unlimited resources to permit exponential growth. So this one talks about the realistic growth model. अगर एक एरिया में unlimited resources है तो एक species बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, बट अगर अनलिमिटेड नहीं है तो वो मैक्सिमम पोटेंशियल नहीं रीच करेगी, एक सर्टन पॉइंट में ही ख़त्म हो जाएगी. सो दिस इज़ रियलिस्टिकली, बिकॉज अगर हम एक हैबिटेट में रह रहे हैं तो हमें कभी भी रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं मिलेंगे कहीं पे भी, एंड अ सिंगल स्पीशीज़ वुड नॉट बी देयर. हमें हमेशा इंटरलिंक्ड स्पीशीज़ मिलेंगी एंड every population has different species or same species interact with each other. So कभी भी उनके लिए unlimited resources नहीं होंगे. So in this, logistic growth talks about the limited resources and we have a limit as nature's carrying capacity for that species in a habitat. A population growing in a habitat with limited resources would show a naturally increasing lag phase. And in logistic growth, we have a certain limit which is called the carrying capacity for the particular species. So if we talk about the world's per logistic growth, we have this equation dn by dt is equals to Rn k minus n upon k, where k is the carrying capacity, n is the population density at time t, and r is the intrinsic rate of natural increase, and this is also called the reproductive fitness. So moving forward to the
Population interactions. Population interactions is very important and it is the most important topic in this chapter. हर साल हमेशा इस चैप्टर में से अगर क्वेश्चन आएगा तो पॉपुलेशन इंट्रैक्शन से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा एंड दिस चैप्टर हैज़ अराउंड 3 to 4 questions every year. So population interactions is the most important topic according to the topic wise weightage we have. Population interactions can be of 6 different types: mutualism, predation, competition, and parasitism, commensalism, amensalism, and predation. So in mutualism, both the species are benefited and it's an obligatory relationship. Competition in the both the species are negatively impacted and predation में एक species को benefit होता है, दूसरा is negatively impacted और detrimental effect होता है. थर्ड इज पैरासिटिज्म. पैरासिटिज्म में एक को बेनिफिट होता है, दूसरे को हार्म होता है. बिकॉज अगर हम पैरासाइट्स की बात करें, इट टेक्स न्यूट्रिशन और द शेल्टर फ्रॉम द होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड होस्ट को अल्टीमेटली नुकसान ही हो रहा है. कमेंसलिज्म में फर्स्ट इज बेनिफिटेड एंड द सेकेंड वन इज नॉट अफेक्टेड एट ऑल. अमेंसलिज्म में वन स्पीशीज इज नॉट affected at all and the other species is detrimentally affected. In predation, if we talk about predation में एक species का फायदा होता है और दूसरे species का नुकसान होता है. So if we talk about predation, predator and prey are linked in a way that we can take an example of tiger and deer. Tiger takes a check on the deer population. अगर tiger को हम हटा देंगे तो deer population बहुत ज़्यादा increase हो जाएगी. And even the sparrow eating seeds is also an example of predator and prey species. So exotic species if are introduced to a geographical area, they become invasive and अगर वहाँ पे उसका natural predator नहीं present होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा increase हो जाएगा. They can even adversely affect to the crop and other species in that indigenous area. So we take an example of the prickly pear cactus in Australia in 1920s. It caused the havoc because उसका natural cactus feeding plant जो उसका predator था वो वहाँ पे present नहीं था. Cactus feeding moth, this is the predator. This is a natural predator for the prickly pear cactus and this eats the cactus species. Even in the American Pacific coast, the starfish Pisaster is an important predator for the prey species. So predators eventually also take a check on the prey species because अगर predator बहुत ज़्यादा prey खाएगा तो prey extinct हो जाएगा and then the predator will also become extinct because उसके पास food ही नहीं होगा, prey ख़त्म ही हो जाएगा उसका. And moving forward, we have certain mechanisms that some species use to save themselves from the predators, as we have this camouflage method. In this, a distasteful butterfly, that is monarch, which is a poisonous butterfly, is of a certain combination of color, and the viceroy butterfly, which is not distasteful, is also looks similar to the monarch butterfly because अगर monarch butterfly होगी उसको कोई predator species खाएगी तो it would be distasteful and it would avoid the monarch butterfly after that. And the viceroy butterfly, which is not distasteful but it still has the similar looks as the monarch butterfly, it also gets saved from the predators because it looks similar and it camouflages itself. Now in competition, different species compete for the same resources, that is food and space. Now we have some principles like the Gauss's exclusion principle and the Gauss's competitive release. So in this, there was a Galapagos island and there were Abingdon tortoise and the goats. So both of them feed on the grass. So due to the goats more efficient feeding on the grass, Abingdon tortoise were becoming extinct because उनको food नहीं मिल रहा था. So we have this Gauss's competitive exclusion principle that states two closely related species competing for the same resources cannot be coexisting indefinitely, and the competitively superior species would be dominating and the inferior ones would be eliminated eventually. This says कि अगर दो species हैं and उसमें से जो एक dominate कर रहा है, एक superior है, तो वो दोनों साथ में नहीं रह सकते same resources and food and space के लिए, because eventually the dominating one would be the superior one and the inferior one would be eliminated. If you want the species to coexist at the same time in the same area, तो उन्हें कुछ processes adapt करने पड़ेंगे जिससे वो एक साथ रह सके, such as the resource partitioning or the difference in the foraging processes. Because अगर उनके different times पे different चीज़ें चल रही होंगी तो वो same resources के साथ भी एक दूसरे के साथ adapt करके रह सकते हैं, coexist कर सकते हैं. Next we move to the parasitism.
In parasitism, we have the host organism providing the parasite its nutrition and the shelter where it lives. The parasite can be both ectoparasite or an endoparasite. Parasites evolve as the host evolves, because अगर host evolve करेगा, उसकी body में certain mechanisms evolve करेंगे, then the parasite would also have to be able to adapt to the certain processes that have evolved. So अगर host evolve कर रहा है, उसकी body में different changes आ रहे हैं, तो parasite की body में भी change आएगा to adapt to the certain conditions. So in this way, parasite and host are linked together, and the parasite achieves its nutrition and the other essential factors it needs from the host organism. Now we have some parasites examples, like the human liver fluke. It is a trematode parasite. Now what does a trematode parasite means? Trematode parasite has 3 different host organisms. जैसे ये liver fluke है, this affects a snail, then a fish and then a human being. So in this way वो 3 host को acquire कर रहा है, 3 host से अपना life cycle complete कर रहा है. So this is a trematode parasite. Now we have the malarial parasite, which needs a vector, that's a mosquito. And then we have other parasites, and ectoparasites affect the external surface of the host organism, and endoparasites affect the internal organs. So ectoparasites का example हो सकता है cuscuta, which is a plant, parasitic plant, and also the ectoparasite copepods, which fishes have, marine fishes have copepods. Then we have brood parasitism. Brood parasitism में जैसे कोयल होती है, कोयल it lays eggs in the crow's nest, and the crow hatches the eggs, or the birds grow inside the egg, and the कोयल benefits from it. वो अपने eggs किसी और के उसमें रख रही है just because वो similar दिखती है and उसके eggs similar दिखते हैं, so it achieves the benefit of it. नेक्स्ट वी मूव टू द कमेंसलिज्म. कमेंसलिज्म में एक को हार्म नहीं हो, एक को बिल्कुल अफेक्ट नहीं होगा एंड दूसरे वाले का फायदा हो रहा होगा. सो वन वुड बी हैविंग अ बेनिफिटरी रिलेशनशिप एंड द अदर वुड नॉट बी अफेक्टेड एट ऑल. इन दिस वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑर्किड ग्रोइंग ऑन द मैंगो एज एन एपिफाइट. उसमें मैंगो को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, बट द ऑर्किड इज बेनिफिटेड. इन द सेम वे द कैटल एग्रेट एंड द कैटल एग्रेट्स को ये फायदा होता है एज द कैटल मूव सॉइल से जो अंदर के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो निकल जाते हैं. एज द कैटल मूव्स अलॉन्ग साइड विद ग्रेजिंग, सो द कैटल एग्रेस इवेंचुअली गेट द इंसेक्ट्स एंड दे ईट इट. सो उनका फायदा हो रहा है बिकॉज दे डिराइव इट्स न्यूट्रिशन, बट द कैटल सिंपली मूव्स अवे. कैटल को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा. नाउ वी हैव म्यूचुअलिज्म. म्यूचुअलिज्म में दोनों की ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप होती है एंड बोथ ऑफ देम आर इवेंचुअली बेनिफिटेड. एंड दिस इज अ रिलेशनशिप जहाँ एक अगर एक्सटिंक्ट हो जाएगा तो दूसरा भी हो जाएगा. एज वी हैव द लाइकेंस. लाइकेंस आर अ mutualistic obligatory relationship between the plant species or cyanobacteria autotrophic and the certain fungus. And then we have this mycorrhizae, which have the fungal. In this, the mycorrhiza are the association between fungi and the plants and the roots of higher plants. In this, the fungus provides the absorption of the nutrients from the soil, and the plant yields the energy yielding carbohydrates. Another example for mutualism would be a fig tree and wasp. The wasp lays its eggs in the fruit of the fig tree, and the fig provides the nourishment to its larvae. एंड इन सिमिलरली फिग की जो फिग ट्री है, फिग प्लांट है, उसकी पॉलिनेशन में वॉस्प हेल्प कर रहा है इवेंचुअली. सो इन दिस वे दीज म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप्स हैव both of the organism benefited and both of them co-evolved together. Another example we have of orchids, and this is a different and a weird example we can say. An orchid has a bewildering diversity of floral patterns, many of which have evolved to attract the right pollinator insect, bees and bumblebees, and ensure guaranteed pollination. इसमें ऑफायरस ऑर्किड होता है which provides sexual deceit, and इसमें eventually the bee species pseudocopulates the plant petal and helps in its pollination. इसमें bee species जो होती है, the female bee species has an uncanny resemblance to the ophrys petal, the flower petal, and in this way the petal has this process of sexual deceit to the bee. The male bee is attracted to the petal and it pseudocopulates, and in such a way जब वो pseudocopulate करता है, some pollen grains or it gets stuck to the male bee, and when it sits on other plant तो वहाँ पर वो pollination कर देगा. So in this way both of these species are related to each other, और ये दोनों obligatory होते हैं. जो mutualistic relationships होते हैं very obligatory and beneficial relationship for both of the species.
So here we complete this chapter, and I hope you understand every topic and I would help you in some way in your preparation. So if you like this video, please subscribe to my channel and comment below if you want another video or any help for another topic you want. So thank you.